we were doing 6.4 children, and now we have to take up question number 4 from here. I hope you've done the previous questions and those are all very clear to you, okay, because this question would also require knowledge of those question working, and it's a bit typical to understand, so please pay attention, okay. So question number 4 says that find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square, and then we have to find the square root of the perfect square so obtained. Okay, so there are some 5 parts here. I've done 1 2 for you, and rest 3 you will practice and see whether you've understood or not. Okay, now see, these numbers that are given here are children not perfect square. Abhi tak jo humne kara tha, in those questions we had a perfect square, so we studied how to find its square root. Okay, now these are not perfect squares, but we want to know how we can make it a perfect square. Okay, by adding or at times subtracting. First we are moving on to subtracting. So 402 is your first number. So if you have to find its square root by division method, remember what were we doing? We were pairing. So we pair first 02 and then next 40 can be taken as 4 only. Then we find the nearest square to the first group, that is 4 out here. So that is 2 2s are 4, remainder 0. Then you copy down the whole pair 02. Then you double this number 2, that becomes 4. Then we think of a number here which will be multiplied with itself, 1 with this whole 1, whichever it is, not necessarily 1, x or something, and you should get that number near to this. Okay, so even if you take the smallest one, that is 1. So 41 into 1 will make it 41, which is greater than this. So naturally this has to go 0 times. So 0 here and that 0 also in the quotient. So 0 into 40 becomes 0. Then you find the difference. Okay, so you are left with remainder 2. अभी perfect square होने के लिए क्या होना चाहिए? We should get the remainder as 0. Alright, so if your remainder is 0 only, then you say, जैसे division finish off हो जाता है, तो when your remainder is 0 then you say that this is a perfect square. अभी यहाँ पे remainder बच गया है, so this is not a perfect square. ठीक है, तो यहाँ पे remainder क्या होना चाहिए था हमारे पास? 0, तब ये perfect square होता. राइट, सो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इससे क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, इस नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो इसमें 2 एक्स्ट्रा है चिल्ड्रन. इफ देयर वाज नो 2 आउट हियर, राइट, इफ इट वाज अ 0 रिमाइंडर, इट वुड हैव बीन अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, सो ये 2 एक्स्ट्रा जो है ये आप इससे हटा देंगे. सो वी वुड से वी विल -2 plus 2 minus 2 will give you a 0 remainder, and then you would say this is a perfect square. So जो भी remainder आता है उसको आप subtract कर देते हो. So we will say 2 should be subtracted from 402 to get a perfect square, and 402 minus 2 will become 400, and 400 is a perfect square. Okay, 2 zeros में से एक 0 आ गया, 4 का under root 2. Okay, anyways that is another trick, and from here we already know the quotient becomes our under root. Right, this becomes our square root. So the quotient out here was 40. So under root of 20. So under root of 400 would be 20. Is that clear? लेकिन 400 perfect square है, 402 नहीं था, तो ये जो 2 extra था वो हमने इससे minus कर दिया. So is that clear? जो remainder आता है आप उसको वही remainder आप हटा देते हो, because 0 would imply a perfect square, and then that quotient is your square root. Clear? Okay, so one more example. Likewise, you had to find 4,000. From here you have to check whether it is a perfect square or not, and if not, how can we make it a perfect square? So again we paired 0 with 0, then 40, next pair, so nearest square to 40, which is 6 6 are 36, remainder 4, the whole pair 0 0 copied down, you double this numbers, double of 6 is 12, then you think of a number here जो 400 के nearest आएगा. So naturally 4 times तो बड़ा ही हो जाएगा, ये 4 1s are 4 तो आएगा, but then यहाँ 4 2s are 8 बड़ा हो जाएगा number, right? So smaller than 4, that is 3. We will take it 3 times. So 3 3s are 9, 3 2s are 6, and 3 1s are 3. If you find the difference, that is coming out to be 31. तो ये 31 remainder जो हमारा है, remainder ये extra है, यहाँ पे 0 आना चाहिए था, then it would have been a perfect square and the square root would have been 63. तो जो remainder आया है वो आप subtract कर दो. 31 minus 31 करोगे तो बैलेंस होके 0 remainder बन गया. Got that? Okay, so we would say therefore the least number that should be subtracted from the given number is 31, so that the number becomes a perfect square. And what will be that perfect square? तो ये number तो square नहीं था, इसमें तो 31 digits extra थे, तो आप इससे 31 minus करके जो number आता है
वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. एंड किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 63 का. द क्वोशंट आउट हियर गिव्स यू द स्क्वायर रूट. Clear? Okay, now there are some more parts out here, children, which you'll try on your own, and I will also discuss fifth question. That's the next one, because both of them are somewhat similar. Only इसमें subtracting था, उसमें आपका adding है. Okay, so this question you can see, find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. ओके, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड पूछ रहा है, जितनी एक्स्ट्रा है वो माइनस करो. एंड यहाँ पे व्हाट शुड बी एडेड, ऐड क्या हम इसमें करें, इस नंबर को और कितना बड़ा बनाएं कि इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, सो वील सी देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस हियर. दिस इज योर सेकंड पार्ट, सेकंड एग्जांपल of question number 5 that I have taken first. 1750. So pairing करोगे आप again, which will be 50 and 17. So nearest square to 17 is 4 4s are 16. Remainder 1. Copy down the whole pair 50 here. Then double of 4, which is 8. Now we have to think of a number here multiplied with the same here. This whole product smaller than 150 or near to 150. Okay, there are two methods of doing it. I'll explain you both. तो अभी तक जो हम करते आए हैं पहले मैं उससे आपको बता दे रही हूँ. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? We were finding a number smaller than 150. Okay, so smaller than 150 it will go 1 times only because 8 2s are 16 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, right? तो 1 times हमने ले लिया, 1 here 1 here, so 1 1s are 1, 1 8s are 8. डिफरेंस करोगे 10 minus 1 9, this becomes 4 minus 14 rather minus 8 which is 6. तो इसका रिमाइंडर आ रहा है 69. तो ये 69 एक्स्ट्रा हो गया. अगर यहाँ पे 0 रिमाइंडर आता तब ये परफेक्ट स्क्वायर होता, अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, तो अब अगर हम 69 हटाते हैं, मीन्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा. उस समय ये 41 का परफेक्ट स्क्वायर होगा. बट हमारा क्वेश्चन हटाओ नहीं था. Our question wasn't what should be subtracted, it was what should be added. तो जैसा क्वेश्चन है हमें accordingly we have to look for the solution. Okay, so if it was subtracted तो you would have straight away said let's subtract 69 and then we get a perfect square of 41. Okay, तो अभी ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, इसमें एडिशन करना है. तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि 41 के बाद जो आएगा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर. ऑलराइट, स्क्वायर्स लाइक सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वेयरिंग आते जाते हैं ना, डेसिमल्स की तो होंगे नहीं यहाँ पे. सो 41 का स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं. I mean 41, this number is more than 41's perfect square. Okay, so after 41 comes 42. तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 42 का स्क्वायर. So 42 का स्क्वायर is coming out to be 1764. Okay, so we want this number to now become 1764. तब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. ओके, 41 का स्क्वायर तो इससे छोटा होगा, 69 माइनस करके मिलेगा. बट हमें माइनस नहीं करना था, हमें ऐड करना था. तो ऐड करने में हमें नेक्स्ट वाले का परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा. तो इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, 42. 42 का स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 1764. सो मीन्स वी वांट दिस नंबर नाउ टू बिकम 1764 बाय एडिंग समथिंग. व्हाट वुड बी दैट समथिंग देन? द डिफरेंस कितना कम रह गया है. 1764 परफेक्ट स्क्वायर था, 1750 हमारे पास ऑलरेडी है. सो फाइंडिंग द डिफरेंस 14. तो 14 perfect square, 14 has to be added so that you get a perfect square. So we would say hence the number to be added to this will be, इन दोनों को माइनस कर दो, perfect square माइनस जो given number था. 14 has to be added and under root of this would be 42 जो next perfect square होगा. अभी यहाँ पे ये मत ले लेना, ठीक है. माइनस करने में तो सीधे यही आता है अंडर रूट, क्योंकि हम छोटा कर देते हैं उस नंबर को, पहले वाले नंबर के बराबर बनाते हैं. अभी यहाँ पे एडिंग में नेक्स्ट वाले का आएगा. सो द नेक्स्ट वुड बी 42. दिस वाज 42 स्क्वायर. ओके, सो ये वर्किंग थोड़ी, दिस इज व्हाट यू वर डूइंग टिल नाउ, बट इट इज वेरी बिट लेंदी चिल्ड्रन. ओके, सो देयर इज अनदर वे यू कैन डू इट which I find is shorter, but it's up to you. आपको जो वाला properly समझ में आता है आप वो करो. Okay, I have done it by the other way also, so I'll show you that. Okay, वर्किंग स्टार्टिंग विल बी द सेम. 1750 की पेयरिंग हुई थी, 4 4 16 एंड यहाँ पे हमारा डिफरेंस करके 150 आ गया था. नाउ व्हाट आई हैव डन इज हियर दैट बिकॉज द क्वेश्चन वाज नॉट सब्ट्रैक्ट, इट वाज व्हाट शुड बी एडेड. सो आई हैव लुक्ड फॉर नेगेटिव रिमाइंडर. ऑलराइट, मैंने इसको यहाँ पे जैसे 1 टाइम्स लिया था, 1 टाइम्स नहीं लेके 2 टाइम्स ले लिया, उसके अगले टाइम ले लिया, राइट, बिकॉज इससे मेरा इतने डिजिट्स एक्स्ट्रा हो रहे थे.